Hello students, today this is my first video for class 11th whose second chapters is units and measurement in physics subject. So we will discuss about the each topic of this chapters unit and measurements one by one. The first topic in this chapter is the physical quantities. But what is the physical quantities? Physical quantities is a property or characteristics which can be measured, जिसे मेजर किया जा सकता हो and follows the laws of physics. So physical quantity. Dear students, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, सो द लेंथ ऑफ दिस मार्कर कैन बी मेजर्ड बाय यू. आप इसको मेजर करके बता सकते हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर. सो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज योर मास? यू कैन मेजर इट वेरी इजिली. सो मास इज द फिजिकल क्वांटिटीज. What is the speed of any body, any car? So speed is a physical quantities. In physics there are so many quantities are there which are the physical quantities because they follows the laws of physics and they also can be measured. Now tell me, happiness. Can you measure the happiness of any personality? No, you can't measure it. आप इसे measure नहीं कर सकते. So happiness is not a physical quantities. बच्चों, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आर्ट बनाना चाहते हो, सभी लोग बनाते हो, अच्छा आर्ट बनाते हो. तो क्या आर्ट इसकल एक फिजिकल क्वांटिटी है? जी नहीं, क्योंकि यू कॉन्ट मेज़र इट. आप इसे मेज़र नहीं कर सकते हो. किसी पेंटिंग स्किल को आप मेज़र नहीं कर सकते हो. सो पेंटिंग स्किल इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटीज़. सो वेरी सिंपल, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड आल्सो व्हिच फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज़. बच्चों, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, उसकी लाइटिंग कम आ रही है, तो सपोज करते हैं दिस इज द पेपर सीट एंड यू पुट हियर 100 watt bulbs which are glowing like this. तो जब ये ग्लो करेगा तो इसकी लाइट इस पेपर्स पर पड़ेगी, इसकी लाइट्स इस पेपर पर पड़ेगी. तो बट नेचुरल है कि इस पेपर का ये जो पोर्शन होगा ये अधिक शाइनिंग करेगा, इसकी ल्यूमिनस क्या होगी? अधिक होगी. किसके कंपैरिजन में? अगर आप इधर एक कैंडल जला दे रहे हो, एक कैंडल आप जलाते हो, तो इस कैंडल से जो लाइट इसके इस साइड में पड़ेगी 100 वाट के बल्ब से जो चमक इस पर पड़ेगी उससे हमेशा कम होगा. अगर हम इसके दोनों सरफेस की चमक को, ल्यूमिनस को देखना चाहें तो हमें नंबर्स ऑफ कैंडल्स यहां और बढ़ाने पड़ेंगे और कैंडल्स बढ़ाने पड़ेंगे. अगर हम नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ाते जाएं तो यहां की शाइनिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे हम नंबर्स ऑफ कैंडल्स बढ़ाते जाएंगे, यहाँ की शाइनिंग बढ़ते बढ़ते एक अवस्था ऐसी आएगी कि शाइनिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पेपर शीट्स आर इक्वल. सो वी कैन शो दैट
luminous on the both sides are equal when one bulb is equal to 20. Suppose we put here 20 candles, 30 candles, 40 candles. Suppose we put here 20 candles. In such a way the luminous on the both sides are the same. So one bulb is equal to 20 candles. Here on this condition the luminous on the both sides are the same. So we can say that the luminous of one bulb is equal to 20 candles. It means you can measure the luminous of a bulb very easily. So luminous is a physical quantities. Now types of physical quantities. Physical quantities are two types. First is the fundamental quantities and second is the derived quantities. Now what are the fundamental quantities? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे हैं, जैसे आप देखो अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हो तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच स्टार्टिंग लेटर पढ़ते हो. कैन यू स्प्लिट दीज स्टार्टिंग लेटर्स ए बी सी? नो. बट विद द कम्बिनेशंस ऑफ these starting letters you can make the word and then sentence. On the same patterns, in physical quantities there are some quantities which are independent, which cannot be expressed in the other physical quantities or which cannot be split into the smaller parts. Such types of quantities is known as a fundamental quantities. So you can say that a physical quantities a physical quantity which cannot be expressed in terms of other quantities is called fundamental quantities. There are some physical fundamental quantities are like mass, time, length, current. These are the example of the physical quantities. Now what are the derived quantities? Derived quantities are those quantities which can be expressed in the terms of two or more other physical quantities. A quantities which can be expressed as two or more other physical quantities is called derived quantity. For examples, what is the speed? Speed is distance upon time. So speed can be expressed as distance and time. So speed is a derived quantities. After this, work, force, etc. are the examples of derived quantities. Second is the measurement of physical quantities.
How you can measure any physical quantities? It is very simple. Measurement of physical quantities means a comparison of numerical value and its units. The comparison of magnitude and its unit is the measurement of physical quantities. It means any physical quantities contain two things, that is the numerical value and second one is the unit. Numerical value means magnitude and second one is the unit. Suppose the length of pen is 15 centimeter. Since length can be measured, so length is the physical quantities, and if a physical quantity is present, then it have two things, that is numerical value and its unit. This is the numerical values of physical quantity and this is the unit. It means you can say that the product of numerical value and units is the length of pen. So you can write measure of physical quantities is equal to numerical value into its unit. Suppose, for example, if mass of a person is 50 kg, so 50 is the numerical value, this is represented by N1 and kg its unit, that is U1. Suppose you represent the mass, this which is the physical quantities of a person, and this is represented by capital Q. It means Q is the representation of physical quantities. Now the mass of any person is 50 kg, so 50 is the numerical value and kg is its unit. If you want to convert this kg into the gram, what happen? As you know, 1 kilogram is equal to 1000 gram. After putting, you get 50 into 1000, that is 50,000 gram. So here the numerical value has been changed as you change their units. What is the numerical value? That is the next numerical value, 50,000. So its numerical value is N2 and its unit is U2. So Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2. आप इस रिजल्ट से क्या देखें? अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की एक वैल्यू को आप चेंज करते हो, इट मीन्स एज यू इंक्रीज देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, देयर यूनिट्स reduces. किलोग्राम इज द बिग यूनिट, ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट. तो जैसे ही आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को बढ़ाते हो, उसके यूनिट्स क्या होने लगते हैं? घटने लगते हैं. और अगर यूनिट को बढ़ाते हो तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज घटने लगते हैं. इट मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. अगर आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तब भी ये सारी वैल्यूज फिजिकल क्वांटिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप चाहे उसके यूनिट कितना हो भी बदलते जाओ, देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज. सो यू कैन से दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू
N3U3 is equal to dash dash dash. Easily you can say that Nu is equal to constant. It means product of numerical value of physical quantities and its unit is constant. And in physics you can write N is inversely proportional to U. These are the concept of the physical quantities.